Good morning, hello and welcome to all of you, my dear students. Today our topic is the Mughal Empire. My dear students, before that we all are already discussed about that the Delhi Sultanate, and under the Delhi Sultanate we all are discuss about that Delhi Sultanate was ruled by 5 successive dynasties. Knowing if the see about that which dynasty ruled under the Delhi Sultanate, then first we know that the Slave dynasty, the Khilji dynasty, the Tughlaq dynasty, the Sayyid dynasty, and last the Lodi dynasty. My dear students, we know very well under the Slave dynasty Qutbuddin Aibak established the Delhi Sultanate as the name of the Slave dynasty and ruled continued 4 years. After the death of Qutbuddin Aibak, Iltutmish again ruled Delhi Sultanate under the name of Slave dynasty. After the death of Iltutmish, Raja Sultan became the emperor, became the Sultan of Slave dynasty, and after the death of Raja Sultan, again Balban extended the throne and start rule over the Delhi Sultanate under the name of Slave dynasty. After that, Khalji dynasty come, and then we all again discuss in the last topic that Alauddin Khilji policy, what was the market control policy of Alauddin Khilji, which type of work for the social reforms, and which areas, especially conquest of Deccan and revenue reforms and land revenue system, those are introduced by Alauddin Khilji. We all already discussed economic reforms also. And after that, we all are discuss about the Tughlaq dynasty, and under the Tughlaq dynasty, Muhammad bin Tughlaq policies, capital transfer, token currency introduction, and taxation policy, issue the token currency, we all are discussed. Then after Muhammad bin Tughlaq, in your book, other part of the Slave dynasty, and after the Khalji dynasty, after the Tughlaq dynasty, no one any other dynasties are given, but administrations under the Delhi Sultanate, this type of administration under the Delhi Sultanate, this type of rule and regulations, this type of the social condition of Delhi Sultanate, these all are discussed in the last chapter, in chapter number 7b. My dear students, this is a very important chapter for annual examination, and many type of question in the competitive exam also asked in the Mughal Empire, which type of ruler and what was their policy, how the Mughal Empire established in India. These all are the discussed into the chapter number 8a. My dear students, in Mughal Empire, first of all we know about that who were the Mughals. Okay, who were the Mughals? Okay, so see that who were the Mughals. You know that first of all I would like to introduce about that by the early 16th century CE, the Delhi Sultanate had been considerably reduced in size, since Punjab, Sindh, Multan, Jaunpur, Bengal, Mewar, Malwa, Gujarat and Khandesh no longer owned allegiance to it. Means Delhi Sultanate Alauddin Khilji के बाद की बात करें या फिर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बाद के समय की बात करें, तो मुझे पता चलता है कि जो 16th सेंचुरी था, वो 16th सेंचुरी के टाइम तक आते आते दिल्ली सल्तनत का जो रुतबा था, जो पावर और पोजीशन था, जो उसकी साइज़ थी, वो पंजाब, सिंध, मुल्तान, जौनपुर, बंगाल, मेवाड़, मालवा, गुजरात और खानदेश से धीरे धीरे कम होता चला गया. सो एंड आल्सो in the Deccan and the South, the Bahmani kingdom and the mighty kingdom of Vijayanagar functioned independently. और दो ऐसे किंगडम थे जो साउथ इंडियन थे, जिसमें बहमनी और विजयनगर का नाम आता है. ये दोनों किंगडम अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिए थे, दिल्ली सल्तनत से अलग कर लिए थे. सो द इंटरनल स्ट्रगल, okay, which struggle, internal struggle of the nobility had also considerably weakened the authority of the Sultan of Delhi Sultanate, Ibrahim Lodi. धीरे धीरे आंतरिक कलह, जो अंदर के झगड़े थे, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत की नींव को कमज़ोर करता चला गया, और फाइनली इब्राहिम लोदी तक आते आते दिल्ली सल्तनत काफ़ी ऋण और छिड़ हो चुका था. इट वॉज अगेंस्ट द बैक ड्रॉप ऑफ डिसयूनिटी एंड कन्फ्लिक्ट द मुगल्स इन्वेंटेड इंडिया. और ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी मुगलों के लिए भारत पर अटैक करने के लिए. सो द मुगल वर द
who were the Mughal? So first of all, that we already discuss about that who were the Mughals. Actually, Mughal were the descendants, means संतान थे किसके? Mongols के. The Mughal were the descendants of Mongols of Mongolia in Central Asia. They all are come from Mongolia in Central Asia. ये कहाँ से आए थे? मंगोलिया से आए थे. मंगोलिया कहाँ पर था? सेंट्रल एशिया का एक पार्ट है, एक हिस्सा है. और ये सभी मुगल्स जो मंगोल वंश के शासन के करने वाले मंगोलों के वंशज हैं और ये मंगोलिया से आए और सेंट्रल एशिया में है ये. सो दे हैड डेवलप्ड ए न्यू आर्ट ऑफ वॉरफेयर बाय यूज ऑफ आर्टिलरी इन वॉर. आर्टिलरी मीन्स artillery war. You know very well that the artillery word given, that artillery in war. The Mughal had heard a lot about India's huge wealth. मुगलों ने सुन रखा था कि भारत में बहुत धन है और बहुत खजाना है. They wanted to plunder it somehow. और इसी के वजह से लूट के पर्पज से एक तरह से भारत को तहस नहस करने के लिए ये मुगल भारत में आना शुरू किए. एंड दैट टाइम नो वन एनी कैपेबल रूलर दोज हु कैन मेंटेन द सुपरमेसी एंड डिग्निटी ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द इंडिया. सो दे मेड फ्रीक्वेंट अटैक ऑन इंडिया एंड कंटिन्यूसली हार्स्ड द दिल्ली सल्तनत. कंटिन्यू अटैक करते चले गए और दिल्ली सल्तनत को कमज़ोर करते चले गए, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते चले गए. फाइनली इन 1526, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट इन आवर हिस्ट्री. विच डेट? 1526. 1526 they succeeded when Babur defeated Ibrahim Lodi at Panipat in the first battle of Panipat and laid the foundation of the Mughal Empire in India. Okay, so it was the very important that when the Babur defeated Ibrahim Lodi and Lodi dynasty finally came to be an end in the date of 1526. So the span of the Mughal rule in India, which come to be known as the Mughals, and was ruled from 1526 to 1707 for near about 221 year, very long time, 221 year from 1526 to 1707. Okay, so with a number of emperors has come and ruled over the India. My dear students, first of all, this is very clear that Mughals were the descendants of Mongols. किसके संतान थे? मंगोलों के संतान थे. कहाँ से आए थे? They came from मंगोलिया इन सेंट्रल एशिया. कहाँ से आए थे ये? मंगोलिया से, जो सेंट्रल एशिया में है. ये सुन रखे थे कि भारत में बहुत धन है, बहुत खजाना है, इसलिए भारत को लूटा जा सकता है. और उस समय भारत में यूनिटी नहीं थी. इंटरनल स्ट्रगल, इंटरनल फाइटिंग चल रही थी, यूनिटी का अभाव था. और दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी, जो बाबर से लड़ाई भी किया 1526 में, बैटल ऑफ पानीपत में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. इस बैटल में इब्राहिम लोदी का अंत हो गया, मर्डर कर दिया बाबर ने. एंड आफ्टर दैट फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया. ओके, सो दिस इज द 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दैट मुगल्स. नाउ इंडिया ऑन द ईव ऑफ बाबर इन्वेजन. उस समय भारत की कंडीशन क्या थी जब बाबर ने भारत पर अटैक किया था? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल दैट दिस यूनिटी, लैक ऑफ unity in India. The Lodi dynasty was the last dynasty to rule Delhi before the Mughals conquered the northern part of India. The Delhi Sultanate had become very weak. Means Delhi Sultanate काफ़ी weak हो चुका था, काफ़ी कमज़ोर हो चुका था जब बाबर ने भारत पर अटैक किया था. It existed in nothing but in name. केवल नाम का शासन रह गया था. India presented a picture of disunity and chaos due to the ambitions, dissatisfaction, rivalries of the nobles. Many of the provinces had set themselves an independent kingdom. हुआ क्या? मुगलों के आने के पहले ही भारत में यूनिटी का अभाव था. लोगों के अंदर कोई यूनिशन नहीं था. लोगों के अंदर असंतोष था. तमाम तरह के रिवैलरी, विद्रोह हुआ करते थे. खास करके नोबेल्स अपने आप को, अपनी सुपरमेसी को कायम करने के लिए आपस में फाइटिंग कर रहे थे. और तमाम प्रोविंसेस ऐसे थे, खास करके आप अगर बात करें साउथ इंडिया का, तो विजयनगर और बहमनी किंगडम, ये दोनों अपने आप को, विजयनगर और बहमनी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिए थे. किससे? दिल्ली सल्तनत से. ओके, सो दैट टाइम व्हेन द बाबर इन्वेंटेड इंडिया, that time the political unity of India is very weak and Daulat Khan Lodi was
Almost an independent ruler of Punjab, he was discontented after the death of Ibrahim Lodi. Daulat Khan Lodi again extended the throne, but to only control the Punjab. He was discontented with the Ibrahim Lodi because of the cruel treatment he had meted out to his son Dilwar Khan. He wanted to take revenge from him. So, and Alam Khan, an uncle of Ibrahim Lodi, with an eye throne of Delhi, is said to have invented Babur to invent India. Means एक तरह से कहें इब्राहिम लोदी के डर से दौलत खान, कौन, दिलावर खान जो था वो इब्राहिम लोदी के डर से, उसके दूसरा भाई जो था खास करके जो पंजाब पे अपने आप को एलोन किया हुआ था दौलत खान लोदी, ये सभी चाहते थे इब्राहिम लोदी की पावर को छीन करना और इसीलिए बाबर को कॉल किया और बाबर अटैक किया। और बाबर अटैक करने के बाद इब्राहिम लोदी का पावर और सेंट सब कुछ भारत से ख़त्म हो गया और एक नई एम्परर, एक नई देश की शुरुआत हुई। माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट what was the causes behind that success of Babur. Actually, the founder of the Mughal Empire was Jaharuddin Muhammad, popularly known as Babur. Yes, from the age of 11, when he became an orphan, Babur was engaged in fighting unsuccessfully for his ancestral territory of Samarkand in present-day Uzbekistan. He had been driven out from there by the Turkish Uzbek. Okay, so Babur India's conquest, the first battle of Panipat was the first and most important battle because around 1523 Babur was invited by Daulat Khan Lodi, okay, the governor of Punjab, to come to India and help him defeated Ibrahim Lodi. Daulat